testing of continuity. I have given you the memory capsule. What type of problems actually you will find when you are testing the continuity problem. वर्ल्ड में जितना सारा प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी का, you will find only 3 types of problems, and these 3 types of problems are f of x equal v means you will get only value of function. Here is f of x is equal v1 for x not equal to a, v2 for x is equal to a. That means you will find 2 values of function. That means function is defined as 2 types, one at x not equal to a, another at x is equal to a. And the case 3 is you will find 3 values of a function f of x. F of x is equal to 1 value where x less than a, second value v2, x is equal to a, the value of function is v3 at x greater than a. These are the 3 types of problems which you can find when testing the continuity problem. Suppose f of x is equal to single value v, a की वैल्यू दिया गया है. So in order to test the continuity you have to find the functional value is equal to limiting value from that point. From taking the value v you will find functional value and limiting value. The same function v will give you functional value and limiting value. But here function have defined as 2 values, one at x not equal to a, another at x is equal to a. Where this type of function is defined, then in order to test the continuity of a function you have to find functional value is equal to limiting value. Functional value मिलेगा v2 से and limiting value मिलेगा v1 से. So not equal to function से आएगा limiting value and equal वाला function से आएगा functional value. If a function has 3 values, one at less than a, one at equal to a, another at greater than a, you have to show functional value is equal to LHL is equal to RHL. Functional value can be obtained where is equal to sign means v2. So from v2 you will find the functional value, and LHL can be found where there is less than symbol. That means v1 is the value of function for x less than a. So v1 will give the left hand limit, and right hand limit can be obtained from the greater than symbol function. That means v3 will give the RHL function. So these are the 3 different cases where all the problems can be solved. I am again saying a function may have 1 value or may have 2 values or may have 3 values. Another important thing is the note, if a function is given as absolute value function or greatest integer function, in these 2 cases the function may be single value function. That means like case 1, यहाँ f of x is single value given, यहाँ भी f of x is given mod x means single value दिया गया है. But still here in this case you have, in order to show the continuity you have to show functional value is equal to left hand limit इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. मैंने बोला था जहाँ फंक्शन का एक वैल्यू दिया जाएगा तो फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू शो कर देने से कंटिन्यूस हो जाएगा. बट अगर जहाँ दिया जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिस 2 टाइप का फंक्शन का कंटिन्यू टेस्ट करने के लिए हमको फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल LHL इज इक्वल RHL शो करना पड़ेगा. दीज आर द ट्रिक्स टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. टेस्टिंग ऑफ कंटिन्यूटी. Some important problems. The type 1 is when the function has same definition on both sides and on the given point. Look at here, function का एक ही value दिया जाएगा and this is the value of the function on both sides of a given point. Given point means here the given point is x is equal to 1. So the value of the function is 2x plus 1 and this is the value of the function at x is equal to 1 and left to x is equal to 1, right to x is equal to 1. So this is the only value of the function which is on the point and on the both side of the point. If only one value of a function is given, then you have to find the functional value and the limiting value from that point. So solution is, मैंने बोला था जब फंक्शन का एक वैल्यू दिया जाएगा वही फंक्शन से तुम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू. सो सॉल्यूशन इज हियर, गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 2x plus 1 and given point is x is equal to 1. So we have to find functional value and limiting value. Now first is functional value, then is limiting value. Functional value means x is equal to 1, limiting value means x tends to 1. So
x is equal to 1 means put here x is equal to 1, that means f of 1. This is functional value. Limiting value means you have to find the limit of that function as x tends to 1. Very important thing. Functional value means is equal to and it tends to. So this is x is equal, functional value निकाले at x is equal to 1 and limiting value निकाले at x tends to 1. So f of 1 is f of x is 2x plus 1. So f of 1 is put 1 here. This is 2 into 1 plus 1 is 3. And the limiting value, this is limit x tends to 1 and f of x is 2x plus 1. So we have लिमिट में पढ़े थे हम, लिमिट में डायरेक्ट मेथड x इक्वल 1 पुट कर देने से 2 into 1 plus 1 this is 3. So we find here functional value is equal to limiting value. Hence this function f of x is continuous at x is equal to 1. Type 2, when function has same definition on both sides of given point but not on the point. That means x का जो वैल्यू दिया जाएगा वो दोनों तरफ सेम रहेगा बट ऑन द पॉइंट सेम नहीं रहेगा. किससे? टेक एन एग्जाम्पल. लुक एट हियर. टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x by x इफ x नॉट इक्वल टू 0 2 इफ x इज इक्वल 0. सो देखो हियर फंक्शन का 2 वैल्यूज दिया गया है, 2 वैल्यू दिया गया है. एक दिया गया है x नॉट इक्वल 0 एंड अनदर वैल्यू 2 है जहाँ x इज इक्वल 0. सो मैंने बोला था जहाँ फंक्शन का 2 वैल्यू दिया जाएगा तब वहाँ हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एंड लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. लेकिन फंक्शनल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? जहाँ इज इक्वल टू रहेगा. और लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? जहाँ नॉट इक्वल टू रहेगा. सो हियर ए फंक्शन का वैल्यू साइन 2x by x है, x नॉट इक्वल 0 मीन्स x less than 0 or x greater than 0. That means this is the value on both sides of x, but on x this is 2. So यहाँ हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एंड लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. दिस इज एट x इज इक्वल टू 0. फंक्शनल वैल्यू मीन्स हम x इक्वल 0 पे टेस्ट करेंगे. दैट मीन्स f of 0. f of 0. So the f of 0 means the value of the function when x is equal to 0. When x is equal to 0, the value of the function is 2. So this is 2. एंड लिमिटिंग वैल्यू कहाँ निकालेंगे? मैंने पहले से बोला था लिमिट फंक्शनल वैल्यू मीन्स x इज इक्वल टू एंड लिमिटिंग वैल्यू मीन्स नॉट इक्वल टू. जहाँ इक्वल रहेगा फंक्शनल वैल्यू, जहाँ नॉट इक्वल रहेगा लिमिटिंग वैल्यू. मतलब दिस फंक्शन विल गिव फंक्शनल वैल्यू एंड दिस डेफिनेशन विल गिव लिमिटिंग वैल्यू. सो लिमिट x, इधर x इज इक्वल 0, इधर x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x. लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से. So this is sin 2x by x and here we multiply 2 and divide 2. Why? This is because limit x tends to 0. We know that limit x tends to 0 sin x by x is 1. So limit x tends to 0 sin 2x by 2x into 2. So this is 1 into 2 is equal to 2. So functional value is equal to limiting value. Hence that function f of x is continuous at x is equal to 0. This is another case, type 3, when the function has a different definition on both sides of given point. Previous case में हम दिखे थे कि फंक्शन का वैल्यू सेम था x की दोनों ओर. On both sides of x the value of function was same, but here the value of function left to x and right to x are different. Look at here, f of x is 2x plus 1 which is left to x, x less than 0. 0 is the given point. So left to 0 is 2x plus 1 and the value of function is x, right to 0. So left to 0 is 2x plus 1, right to 0 is x, and x is equal to 0. When x is equal to 0, the value of the function is 2x plus 1. So the cases is one is for less than, another is for equal, another is for greater than. So dear students, मैंने पहले से बोला था जहाँ लेस देन है वहाँ से तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, जहाँ इज इक्वल टू है फंक्शनल वैल्यू एंड जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालना है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले किसके साथ, किसके सहायता से, कौन सा फंक्शन लेके हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे? तो इधर इज लेस देन, दिस फंक्शन विल गिव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस आल्सो गिव द फंक्शनल वैल्यू बिकॉज हियर इज इक्वल एंड हियर इज greater than. So this function will give you the right hand limit. Now solution,
test at x is equal to 0. First to find functional value. Functional value means f of 0. X is equal to 0. So f of 0. So put x is equal to 0. तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जहाँ x इज इक्वल टू 0. सो लुक एट हियर x इज इक्वल टू 0. व्हेन x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन f of x is 2x plus 1. So this value will give you the functional value. So if f of x is equal to 2x plus 1, then f of 0, put x is equal to 0. Here put x is equal to 0 means 2 into 0 plus 1, this is 1. So functional value is 1. Now we calculate लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. मैं तुमको कंपेयर करके बता देता हूँ. पहले से बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस. द फर्स्ट स्टेप ऑफ LHL and RHL is like this, and the second step is limit h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h. सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, h टेंड्स टू 0 कर दोगे एंड पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h. एंड इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट सेकेंड स्टेप वही लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, x टेंड्स टू 0 माइनस था, x टेंड्स टू 0 प्लस था ऑफ दैट फंक्शन. इन सेकेंड स्टेप h टेंड्स टू 0 होगा, h टेंड्स टू 0 होगा, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे 0 माइनस h और इधर क्या पुट करेंगे 0 प्लस h. दैट मीन्स f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस h. सो लुक एट हियर, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज f ऑफ माइनस h, एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज h. लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा यही फंक्शन से. दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1. सो f ऑफ माइनस h कितना होगा, x की जगह हम माइनस h पुट करेंगे. h के माइनस h पुट करने से 2 इंटू एक्स हो गया माइनस h प्लस 1, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 1, एंड विच इज इक्वल टू, तो h की जगह 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये 1, तो ये हो गया 1. एंड हियर इधर क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h. राइट हैंड लिमिट मैंने बोला था, राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगा, राइट हैंड वाला फंक्शन कौन सा है, जहाँ ग्रेटर देन मतलब x. तो f ऑफ x अगर s होगा, x हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू x मीन्स f ऑफ h कितना होगा, वी पुट x इज इक्वल टू h. सो दिस इज h एंड h इज 0, दिस इज 0. सो फंक्शनल वैल्यू है 1, LHL 1 बट RHL 0. सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, that is limit does not exist. So remember, if limit of a function doesn't exist, then the function cannot be continuous. So f of x is not continuous at x is equal to 0. Type 4. To find the value of a constant given in the definition of function. कभी कभी ये होता है कि फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, देखो इधर फंक्शन को हम डिफाइन किए 3 टाइप्स. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ax² प्लस b इफ x लेस देन 1, 1 इफ x इज इक्वल 1, 2ax माइनस b इफ x ग्रेटर देन 1. सो फंक्शन को हम डिफाइन किए इन 3 डिफरेंट टाइप्स, बट देयर आर 2 डिफरेंट कंस्टेंट्स a एंड b आर प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. जो फंक्शन को डिफाइन किए है उसमें 2 कंस्टेंट्स है, एंड हियर द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंस्टेंट्स. सो जो कंस्टेंट दिया गया है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वेयर दिस मस्ट सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी. दैट मीन्स हियर द फंक्शन इज गिवन हियर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल 1. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. पहले जो एग्जाम्पल दिया गया था हम उधर क्या कर रहे थे कि we are testing the continuity, but here f of x is continuous. To find the value of constants, so look at here, if this is continuous then this must satisfy the condition of continuity, and here is less than equal greater than. That means you have to find LHL, functional value and RHL. So first हम निकालेंगे functional value. Functional value means f of 1, because here
the function is continuous at x is equal to 1, the given point is 1. So functional value means at x is equal to 1 means f of 1. So f of 1 means the value of a function when x is equal to 1. When x is equal to 1, the value of the function is 1. This is functional value. Then we have to find LHL एंड RHL. अभी मैंने बोल रहा था जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, एक्स टेंड्स टू जो गिवन पॉइंट दिया गया है 1, इधर 1 माइनस होगा एंड हियर एक्स टेंड्स टू 1 प्लस होगा. इन सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 and here in RHL also limit h tends to 0 होगा. but we have to put f of x की जगह कितना पुट करेंगे 1 minus h and here f of x की जगह पुट करेंगे 1 plus h. look at here, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, जो पॉइंट दिया जाएगा उसी पॉइंट में निकालेंगे. x टेंस टू 1 माइनस होगा, x टेंस टू 1 प्लस होगा. एंड सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एच को 0 कर दोगे और x के जगह 1 माइनस एच पुट करोगे, इधर x के एच को 0 करके x की जगह 1 प्लस पुट करोगे और सब आसान से हो जाएगा. कैसे, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, जो f ऑफ 1 माइनस एच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालेंगे, जहाँ लेस देन होगा, हम हियर जी लेस देन. सो यही फंक्शन से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. मतलब एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हमको निकालना है एफ ऑफ 1 माइनस एच. सो एक्स के जगह हम 1 माइनस एच पुट करेंगे. एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट करने से क्या होगा, ए इंटू एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर दो, पुटिंग एक्स इज इक्वल 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस बी एंड हियर इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच. मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगा, जहाँ ग्रेटर देन है. मतलब दिस फंक्शन विल गिव यू RHL. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2ax माइनस बी. तो एफ ऑफ 1 प्लस एच मीन्स एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे. सो क्या होगा 2a होल इंटू 1 प्लस एच माइनस बी. सो नाउ पुट h is equal to 0. Now put h is equal to 0. After putting h is equal to 0, we get a into 1 minus 0 is 1. So 1 square is 1. A into 1 plus b. So this is equal to a plus b. And here putting h is equal to 0. 1 plus 0 is 1. So this is 2a minus b. So this is LHL. This is RHL. And this is functional value. Now as f of x is continuous at x is equal to 1, then LHL is equal to functional value is equal to RHL. According to definition, if the function is continuous, then LHL is equal to functional value is equal to RHL. LHL is a plus b and functional value हम कितना निकाले थे 1 and RHL is equal to 2a minus b. Now इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे और इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे, ए बी निकल जाएगा. दैट मीन्स व्हिच इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल 1 एंड ऑल्सो एंड 2ab इज इक्वल टू 1, व्हिच इम्प्लाइज हमको क्या मिला 3a इज इक्वल टू इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2/3.